at 389 rupees on Amazon. इसका MRP है 499 but instant glow, it works on your skin so well and इतना plumpy fresh looking skin देता है आपको. Hi guys, नमस्ते. हाय माय बेब्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरा नाम है प्रियंका और आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो, क्योंकि विंटर सीजन आ ही चुका है. अभी कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी बेस्ट मॉइस्चराइजर्स फॉर ड्राई एंड नॉर्मल स्किन. तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि हमें बता दीजिए दीदी कि ऑयली स्किन के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर्स कौन से रहेंगे इस विंटर सीजन में. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो एंड हैव सम अमेजिंग रिकमेंडेशंस फॉर यू गाइस. मैं पे टॉप 5 मॉइस्चराइजर पिक्स बताऊंगी मेरे अंडर Rs.500 फॉर द विंटर सीजन. लेट्स बिगिन विद द वीडियो. Let's start with pick number 1, which is almost one of my very favorite moisturizer. I've used it so much and I've talked about it a lot of times. This is the Aqualogica Glow Plus Jello Moisturizers. No कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर होते हैं जो कि होते हैं आपके जेल बेस्ड, बट मैंने ये ध्यान रखा है कि जेल बेस्ड होने के साथ ये थोड़े से थिक जेल बेस्ड हो, क्योंकि विंटर सीजन में जनरली क्या होता है ना, हमारी अगर ऑयली स्किन है तो वो कॉम्बिनेशन हो जाती है, जिसकी कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा नॉर्मल ड्राई की तरफ चली जाती है. आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, तो मेरी स्किन ड्यूरिंग विंटर्स थोड़ा नॉर्मल टू ड्राई की तरफ चली जाती है. सो इफ यू वांट दैट like creamy recommendations, I have linked this video on the I button over here. आप उसको चेकआउट करिए अगर आपको वैसे चाहिए. अगर you are looking for gel based moisturizer, so this video is for you all. So here is the moisturizer. You can see how much I've used it. Now the best part about this moisturizer is that इसमें water lock technology है, which is good, right? And मेरे को overall ये moisturizer बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक अच्छा, बहुत ही intensely hydrating moisturizing moisturizer है. और ये ऐसे पानी जैसा नहीं है कि बस लगाया और गायब हो गया. It stays on your skin. It shows that it's there on your skin and काफ़ी अच्छे से long period के लिए, long duration के लिए ये आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है. सो दिस इज वन ऑफ माई वेरी फेवरेट मॉइस्चराइजर. ऑल्सो दिस इज अवेलेबल फॉर लेस देन 400 रुपीज राइट नाउ ऑन Amazon. सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Amazon पे ग्रेट इंडिया सेल चल रही है, अभी ग्रेट इंडिया शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है, तो जरूर चेकआउट करिएगा, बिकॉज आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू बाय द प्रोडक्ट. सो माई होल स्टोर का लिंक भी होगा, तो चेक दैट आउट एज वेल. उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपको सारे प्रोडक्ट्स एक साथ मिल जाएंगे. It's vegan and it is also cruelty free. This has, I think, this has papaya extracts as well, which is really good. ये आपकी स्किन को ग्लो और हाइड्रेशन देता है. इसमें पपाया और विटामिन सी, एंड राइट नाउ इट्स अवेलेबल एट 389 रुपीज ऑन Amazon. इसका MRP है 499 बट 389 रुपीज पे Amazon पे आपको मिल जाएगा. सो इफ यू आस्क मी अबाउट वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर्स फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन, दिस वन हैज टू बी द वन. Moving on to the second pick is this from Minimalist. The Aqualogica one has a little mango kind of a fragrance. ऐसे मैंगो शेक जैसा फ्रेग्रेंस है. बट द मिनिमलिस्ट प्रो विटामिन B5 10% मॉइस्चराइजर डज नॉट हैव एनी फ्रेग्रेंस. दिस इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन. इट हैज कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, हाइलोरॉनिक एसिड एंड बेटाइन, एंड इट्स लाइट वेट एंड ऑयल फ्री. नाउ दिस इज specially marketed for oily combination skin. They have another one which is the marula oil one, the Sapicam one for normal skin, the marula oil one for dry skin, so you can check that out. But this one is such a nice moisturizer for oily skin. Now इसकी texture कुछ ऐसी है एंड काफ़ी ज़्यादा एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर होने के साथ काफ़ी हाइड्रेटिंग है, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है. अगेन ये वैसा नहीं है कि बिल्कुल पानी जैसा है, लगाया तो गायब हो गया. दिस रियली स्टेज ऑन योर स्किन फॉर सम टाइम, फॉर अ नाइस अमाउंट ऑफ टाइम, एंड आराम से 7-8 घंटे आपकी स्किन को तो हाइड्रेटेड रखेगा ही, मॉइस्चराइज रखेगा ही. विंटर्स में आवर स्किन टेंड्स टू लूज आउट ऑन अ मॉइस्चर वेरी मतलब जल्दी से मॉइस्चर लूज हो जाता है. बट दिस वन इज अ डिसेंट मॉइस्चराइजर. यू कैन रीअप्लाई it whenever you feel like your skin is becoming dry again, and again under a budget. I think this is an amazing pick and I highly recommend you guys. आप इसको भी try कर सकते हो, especially if you're looking for a fragrance free moisturizer. This is again a very good pick you should go for. If you are someone who has acne with your oily skin or combination skin,
This moisturizer is going to be working very good for you. This is the Dot & Key Cica Calming Skin Renewing Night Gel. Now again, I've talked about this moisturizer a lot of times. I don't like a lot of Dot & Key products, as in उनके कुछ जैसे serums मुझे उनके पसंद नहीं है इतने, बट उनके मॉइस्चराइजर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. उनके नए ग्लॉस बॉम्स भी बहुत अच्छे हैं. ग्लॉस बॉस जो उनका लिप ग्लॉसेस आया था. Now this moisturizer is one of my favorite picks. I've finished it so many times and this is perfect for people who have acne prone skin. This is amazing. It's a light gel texture moisturizer. Now let me show you the texture of this one. So this is the texture, you guys, and again it's watery. It blends into the skin like magic. Can you see the difference? I just applied this on this side of my face and you can see the difference. तो काफ़ी अच्छा लाइट वेट जेल टेक्सचर मॉइस्चराइजर है. अगेन इसकी फ्रेग्रेंस एकदम वो टी ट्री वाली फ्रेग्रेंस आती है इसमें. इट हैज सीका विच रियली काम्स डाउन योर इन्फ्लेम्ड स्किन एंड इसका नाम ही है सीका कामिंग रिन्यूइंग नाइट जेल. यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ डे मॉइस्चराइजर, डजंट मैटर एट ऑल, बट इट ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल एज अ नाइट मॉइस्चराइजर. सो वॉट एवर योर चॉइस इज, यू कैन जस्ट टेक इट दैट वे, you can use it that way, and this is a very nice moisturizer to try on. Next up is again one of my very favorite moisturizers. This is from the brand Just Herbs. Now Just Herbs is less talked about, but it is such an amazing brand for skincare, for makeup, for hair care. Especially their skincare and hair care is bomb. I have, ever since I started using them, I loved it. This is one of my favorite moisturizers from Just Herbs. Now this is the brightening gel creme, and this is a moisturizer which is a little thick in consistency but in gel format. तो अगर आपको डार्क स्पॉट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है आपके फेस में, आपको ब्राइटन अप करनी है, आपकी स्किन डल है, बिल्कुल ग्लोइंग नहीं है, बिकॉज विंटर्स में जनरली स्किन डल हो जाती है. दिस इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर. अगेन यू कैन सी हाउ मच आई हैव यूज्ड इट. ऑलमोस्ट एम्प्टीड हाफ ऑफ द टब एंड दिस इज सच अ नाइस मॉइस्चराइजर, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग फॉर ब्राइटनिंग अप योर स्किन. आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग मॉइस्चराइजर. इट रियली keeps your skin hydrated, moisturized for very long time, and सच में ये काम करता है. It gives you an instant glow. It works on your skin so well and इतना plumpy fresh looking skin देता है आपको कि you will definitely love that effect on your skin. So again, if you are looking for something which has vitamin C, इसका vitamin C is derived from Amla, so that's again a very good thing, and it's very lightweight, paraben free, cruelty free. मैं जितने भी products लेकर आई हूँ ना, सब paraben free, cruelty free है और vegan है, और जो कि बिल्कुल ही जिसमें कोई harmful chemicals नहीं है. मैं ऐसे ही products आपके लिए choose करके लेकर आई हूँ आज के वीडियो में. The next pick is this FoxTale Ceramide Super Cream Hydrating Moisturizer. 24-hour hydration, even out skin texture, plant-based ceramide, sodium, hyaluronic क्रॉस पॉलीमर. बहुत कुछ बोलना है और मैं थक जा रही हूँ इतना बोलने में, बिकॉज राइट नाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड, रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, बट आई स्टिल वांटेड टू मेक वीडियोस फॉर यू गाइज बिकॉज आई जस्ट लव दिस थिंग. सो अगर थोड़ी सी कहीं गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ करना. बट येस, आप लोग इतने सारे रिक्वेस्ट लेकर आए थे कि दीदी विंटर सीजन आ रहा है, जल्दी बता दो, तो आई एम जस्ट हियर विद इट. सो ये FoxTale का जो मॉइस्चराइजर है, आई रियली लव FoxTale का पैकेजिंग एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज. अभी 10 दिन से तो मैं इसको कॉन्स्टेंटली यूज कर रही हूँ. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वन इज दैट सेरामाइड का काम होता है कि स्किन की बैरियर को प्रोटेक्ट करना. जो ओवरऑल हमारा जो बैरियर डैमेज हो जाता है ना, जो स्किन का टॉप मोस्ट लेयर है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको हील करना काम होता है. दिस इज हाउ द मॉइस्चराइजर लुक्स, एंड ये कुछ इस तरह के टेक्सचर में आता है ये मॉइस्चराइजर, एंड बहुत ही लाइट वेट है. Now this is a good moisturizer. It will also work for normal and dry skin, but it is lightweight, so it also very well works for normal to combination to oily skin. If you have oily combination skin with acne प्रोन स्किन, एक्ने एक्टिव है या एक्टिव एक्ने है या फिर एक्ने सबसाइड भी हो गया है, दिस इज द मॉइस्चराइजर यू शुड पिक. नेक्स्ट अप, इफ यू जस्ट वांट ओवरऑल ग्लो इन योर स्किन एंड अ हेल्दी लुकिंग सपल प्लम्पी लुकिंग स्किन, दिस इज द मॉइस्चराइजर you can pick. If you don't have any other issues, you just want your skin to glow, to
look like very plumpy, very healthy. This is something that you can pick. And the next one is the, अगर आपको स्किन में डार्क स्पॉट्स है, डलनेस है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्किन मरी मरी सी हो रही है, एंड स्पेशली आपको हाइपर पिगमेंटेशन है और मतलब ओवरऑल आपकी स्किन में पिगमेंटेशन की इशू है, तो आप ज़रूर ये वाला पिक करिए. यू विल डेफिनेटली सी अ ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन. जस्ट हर्ब्स वाला. एंड द मिनिमलिस्ट वन, एनीवन कैन यूज. Whatever problem you have, you can use it because it has vitamin B, vitamin E, so it's again a very good moisturizer. Minimalist वाला भी आप पिक कर सकते हो. Definitely आपका बजट क्या है और आपको क्या लाइकिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है. So that is all about today's video. Do not forget to check out the link in the description box. My whole store का लिंक भी मैंने डाल दिया है. Check that out. और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही जल्दी. Till then, take care. Bye. Lots of love, hugs and kisses. Stay home, stay healthy, stay safe. I love you all so much and see you in the next video. Bye bye.